आप या क्या करती हैं बाय द वे? मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ. अच्छा, एंड यू आर अटेंडिंग दिस But फर्स्ट टाइम? yes, this is the first time I'm attending it. हम्म I did attend the Pasaidan session that you had a while ago, just before the release of your book, हम्म। the introduction bit. I did attend that. हाउ आर यू फीलिंग I आफ्टर डीएन think एक्टिवेशन? I have been very disciplined. I have been very, very active and very productive. I mean, I would see myself procrastinate quite a bit of late, but this is something that I am seeing a change in myself. If I have something which is on my task list, I make sure that I complete it. तो मैं बहुत ज़्यादा productive हो रही हूँ. आफ्टर डीएन एक्टिवेशन आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी परसेंट बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है आपको I इन would, परसेंटेज? yeah, so I would say at least around a 90 to 95% of my things that I need to do for the day, I'm completing it. क्या बात है, सुपर सुपर, दिस Yeah, इज so गुड I पॉइंट्स। am I am being really, and the track when I listen to it, it really relaxes me. I think one day I was listening to it after I finished my exercise and all, and at around 7 in the morning, and I went to sleep. I dozed off. I wouldn't say I dozed off. I was still aware, but I was in a state of, I think I was, ट्रांस yeah, in स्टेट a में, very, यस। yeah. So I knew when the track stopped and everything. I like thinking a lot, so I overthink. Um, that I can say is as good as a hobby for me. Um, but I wasn't in that state. Because I overthink, I overanalyze, and then my perception, everything kind of falls into place. But that didn't happen. I feel that I was giving others more important. So I was thinking that अरे मैं अगर ये करूँगी तो ऐसा कैसे होगा? If I wake up so early, I will disturb everyone. If I wake up early, then this जी one जी, will मैं get थोड़ा सा disturbed. आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़ा हिंट दे देता हूँ हाँ, यहाँ। एनर्जी लीक हो रही थी पहले। yes, very true. I agree. Completely agree. I completely agree. तो डीएन Um, एक्टिवेशन के बाद क्या होता है कि हमारी एनर्जी लीक जो होती थी ना, उसको हम अभी yeah. काफी मतलब वो कंट्रोल में आ जाता Yes, very true. Because I do feel more energetic. That is one of the reasons where I am being more not only productive in other ways, but productive in physical activities as well. So yes, completely true. है। सुपर सुपर, वेरी नाइस, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। Thank you. क्योंकि ये जानना कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सिर्फ विचार करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, सिर्फ टू डू लिस्ट करने से नहीं बढ़ती, हमें ऊर्जा तो चाहिए। मतलब आप लिस्ट बना दोगे लेकिन ऊर्जा कहाँ से लाओगे, एनर्जी कहाँ से लाओगे? तो वो हमारे डीएनए से आती है, और वो डीएनए से अगर हमारे इमोशंस चले गए, उसके वाइब्रेशन चले गए, तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू बिकम अ प्रोडक्ट। सो यू बीइंग अ कम्युनिकेशन ट्रेनर, कम्युनिकेशन कोच एंड प्रोडक्टिविटी कोच, आप अगर इस चीज को खुद अनुभव कर पा रही है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वैलिडेशन कि भाई ये कैसे काम करता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।